ओह सॉरी। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी आ जाएगी आवाज। चलो सर, डिसेबल द चैट बॉक्स। आई विल टेल यू व्हाट यू हैव टू डू इट। क्या करना है आपको मैं बताता हूँ। डू यू नो हाउ मच यू हैव स्पेंट ऑन जोमैटो? कितना आपने स्पेंड कर चुके हो अभी तक जोमैटो पे? डू यू वांट टू फाइंड आउट एग्जैक्टली हाउ मच you have spent on Zomato till now? How much you have spent on Zomato? What you have to do? ठीक है, go to Google, type Zomato spending calculator. Okay, just type that. There is an extension. Add that extension. Okay, once you'll add this extension, go back to Zomato, like just log in into it, then open that extension and click over here. It will show you total amount spent till now. Okay, it will be showing you. Now you will have to ask your doubts. Those who want me to answer in English, please type your doubt in English. ठीक है, जिनको हिंदी में आंसर करना है, जो भी डाउट्स है आपके, ठीक है, वो हिंदी में अपना डाउट टाइप कर दे, तो मैं हिंदी में आपको आंसर कर दूंगा। ठीक है, so yeah, I'm opening the chat box. I'll open it for 5 minutes and then I'll disable. Make sure to ask the question related to whatever I have taught you till now. Eat a food, eat a lot of, no, this is of approximately last how many years? From 2016, so it is of last 6 years. So every year if I see 20,000, every month if we go around 1.5, 1,500 to 2,000, that is over here only there is a Swiggy. Everyone would have spent in last 5-7 years, 5 to 6 years, but a lot of money. Can we draw support and resistance? No, हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 5 मिनट टाइम फ्रेम है। वी कैन नॉट ड्रॉ इट इन 5 मिनट्स सपोर्ट रेजिस्टेंस। मैं रिकॉर्डिंग्स कहाँ भेजता हूँ? ग्रुप में भेजता हूँ। What is benefit of support and resistance? The benefit is that with the help of that we will be trading. Sir, please check now WhatsApp. Gaurav. Which is the lowest stock to practice? Gaurav Soni. It's correct. Which is the lowest price stock to practice? You can go for the stock name. It can IOC, Indian Oil Corporation, IDFC. That is also you can go for it. Okay, so these are lowest price to go for it. All right, let me disable the chat box and answer the questions which has come up. I'll enable it once again. मैं वापस enable करूंगा, उस टाइम आप बताना. Is resistance and support also useful for in if you want to do long-term investment? Technically, yes. The support and resistance will be useful when I'll teach you short-term trading. That point of time, I'll tell you how and which time frame we have to select. In 5 minutes timeline as well, we see gap ups and gap downs. Why is it so? See, gap up and gap down will be happening, okay, only when the market is opening. That means yesterday market had closed at 100 rupees, or let's say 1,000. Tomorrow
At 9:15 only you will see the gap up or gap down. Basically opening below 1000 will be gap down and opening above will be gap up. मुझे ग्रुप में नहीं मिलती रिकॉर्डिंग, सिर्फ आपके लाइव क्लासेस की लिंक आती है। आपने मेरा नंबर नहीं सेव कर रखा होगा, इसी चलते आपको नॉर्मल टेक्स्ट आता होगा। आप जाकर ध्यान से देखोगे तो लिख के आता होगा स्मैट डे 5 डे 6 इंग्लिश स्टाइल। How to choose good stock that meet profit in intraday? I'll tell you the stocks selection. How do we? I'll take up a trade. Oh, sorry, I'll take up a class on that. As of now, what you have to do it, the simpler way which I follow is go to Google, type Nifty 50 stock list. Okay, and NSE 1, NSE India, Nifty 50 stock list, and these are Nifty 50 stocks. So I can just go and check out any of these stocks. ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई भी स्टॉक्स चूज कर सकता हूँ। सिंपल सी बात है, हम लोग यहाँ से अपना स्टॉक्स जो है वो उठा लेंगे। NSE, just type Nifty 50 stock list, that's it, and you will get the list of stocks who are in top like top 50 companies stocks. Okay, even Money Control will tell you which are this. What do you mean by when you are saying Reliance Power? एंड अगर कम प्राइस का देखना है तो टाटा स्टील 100 रुपया, ONGC 127, NTPC 165. So you can just get the stocks like this. Sir, can we do intraday depending on pivot points? Do not ask me this question. First question, like you will be having this question, so I'm answering it. So you will be having a question is that do we need to draw support and resistance line when we already have a pivot points? Yes, we need to draw. Whatever I'm teaching you, everything is important. We need to understand that simple thing that support and resistance we have to draw. There is no trade without that. मैंने सबको रिप्लाई कर दिया था शायद 2 बजे के आसपास। उसके बाद कुछ लोगों को रिप्लाई किया हूँ, वापस से करूंगा। डू नॉट वरी ऑन दैट। What about ebooks? Ebooks was already shared long back. सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का टाइम फ्रेम का रिलेशन बताइए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का टाइम फ्रेम रिलेशन का एज इन कि हम लोग इंट्राडे के लिए वन मिनिमम जो है, मैं बोला हूँ इंट्राडे के लिए 1 आवर जाना है। आप जाने को 4 आवर्स में भी कर सकते हो, डेली टाइम फ्रेम में भी कर सकते हो। पिवट इज बेटर और द अगेन बोथ आर गुड एट देयर ओन। यूपीएल स्टॉक तो बाई कर सकते हैं ना, अगर अच्छा लग रहा है बाई कर लो। भाई इनगल्फिंग कैंडल में विक को कंसीडर करना चाहिए या नहीं? इनगल्फिंग कैंडल से ज्यादा मैटर करता है उसका अगला जो कैंडल होता है क्लोजिंग, ठीक है, वो ज्यादा मैटर करेगा। अगला कैंडल ऊपर नहीं क्लोज होगा देन नहीं कंसीडर करेंगे। सर क्या 8:45 को क्लास होगा? नहीं। What all the candlesticks needed for swing trade? The same candlesticks which I have taught you. सर हॉरिजॉन्टल लाइंस का थोड़ा रिपीट कर दो एक बार। मैं एक लास्ट टाइम मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने रिकॉर्डिंग्स देखा होता, जिनको भी ये डाउट है हॉरिजॉन्टल लाइंस को, तो ये क्वेश्चन की नौबत नहीं आती वैसे पंकज, ठीक है, क्योंकि मैं बस 2 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन। ड्रॉ करने का लॉजिक सिंपल सा है कि अगर किसी भी लेवल पे प्राइस रिवर्स करता है मिनिमम 3 टाइम्स, तो हम लोग उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस कंसिडर करते हैं। या फिर कहीं पे भी मार्केट जाकर स्टक हो जाता है, मतलब रेंज में चला जाता है, तो हम लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। If market is going at any level and getting like it is getting reversed minimum of 3 times, we can consider that level as our support and resistance. Or if market is going at certain level and if it is going in range, we can consider that level as our support and resistance. Now if I'm having this stock Havels, अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में जाकर देखता हूं, तो मेरे लिए कौन सा लेवल होगा, कहाँ पे मिलेगा? ट्रेडिंग व्यू, सेकेंड ऑप्शन, क्लिक ऑन दिस एरो आइकन, horizontal line. I'm clicking at this level and this is my support and resistance. Why? Because market came at this point of time, it got reversed again and again and it was in the range, and again I can consider this level as well for my support and resistance.
I can consider these levels as well for my support and resistance because market is coming at this price and reversing. Okay. Is resistance and support useful for Zomato स्पेंडिंग की स्टेप्स रिपीट कर देंगे. वीडियो भेजूंगा, वीडियो में रिकॉर्डेड होगा, मिल जाएगा. टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स प्लीज. There are two types of candlesticks: bullish pin bar, basically bullish reversal candlesticks. Okay, bullish reversal candlesticks and bearish reversal candlesticks. ठीक है, दो तरीके के कैंडलस्टिक्स होते हैं, बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक्स एंड बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक्स. ओके, इनमें हम लोग बहुत सारे टाइप के होते हैं जो हमने दो पढ़ाया. फर्स्ट इन इज योर बुलिश पिन बार विच इज ऑल्सो नोन एज हैमर. पहला है आपका बुलिश पिन बार जिसको हम लोग हैमर बोलते हैं. फिर है हमारे पास बुलिश एनगल्फिंग. देन हमारे पास है बेयरिश पिन बार जिसको हम लोग शूटिंग स्टार भी बोलते हैं. देन वी हैव बेयरिश एनगल्फिंग. ठीक है, मैं एक क्वेश्चन का आंसर वापस से रिपीट नहीं करूंगा, तो जिनको भी कैंडलस्टिक्स का डाउट है, दिस आई वोंट बी रिपीटिंग इट अगेन. ठीक है, सो मार्केट अगर डाउन साइड जा रहा है, मार्केट इज गोइंग इन डाउन ट्रेंड, इफ वी आर सेइंग अ पिन बार which is having a bullish pin bar which is having a wick towards downside, the body color does not matter. मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, एक पिन बार कैंडल बन रहा है जो जिसका विक नीचे की तरफ ज्यादा है, बॉडी कलर मैटर नहीं करता है. नेक्स्ट कैंडल जो है ऊपर की तरफ क्लोज होता है. अगर नेक्स्ट कैंडल जो है आपका ऊपर की तरफ क्लोज होता है तो हम लोग ये हमारा यूज हो जाएगा कि मतलब मैं इसको कंसिडर करूंगा बुलिश में. यहाँ से हम लोग मार्केट को जनरली एक्सपेक्ट करते हैं कि ऊपर की तरफ जाए. अगर ये कैंडल जो सपोर्ट के पास फॉर्म हो रहा है देन ओनली देयर इज इंपॉर्टेंस, और एल्स बीच में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. पिन बार की जगह कभी कभी आपको एनगल्फिंग कैंडल भी फॉर्म्स होते हैं. ठीक है, पिन बार की जगह कभी कभी एक रेड कैंडल जो बना हुआ है वो कंप्लीटली एनगल्फ हो जाता है. ठीक है, एक ग्रीन कैंडल से. ग्रीन द पिन बार instead of sometimes at pin bar because instead of pin bar there will be a red candle and the next candle will be green which is completely engulfing, or it can be of same size as well. Okay, what matters the most is the next candle closing. Okay, exactly opposite to this, market is going upside, and if we are seeing bearish engulfing candle and if the next candle is closing downside, we can expect the market to come down. ठीक है, हम लोग expect कर सकते हैं मार्केट को नीचे आने की तरफ. बेरिश एनगल्फिंग के अलावा और भी कैंडलस्टिक्स जो फॉर्म हो सकते हैं, वो पिन बार भी हो सकता है. बेरिश पिन बार, अगला कैंडल जो नीचे की तरफ क्लोज होना चाहिए. ठीक है, हाउ टू यूज दीज कोड्स आई हैड एक्सप्लेन इन द last week Tuesday class, Monday or Tuesday class, so watch it out. And can you please explain gap up and gap down? See, I had already forwarded a video of gap up and gap down. You need to watch that. Okay, so gap up and gap down is a different, completely different concept which will take a lot of time. ठीक है, so I'll simply explain you that how does it happen. If you understand, that's great enough. ठीक है, or else I'll forward you this blog. You can read that blog as well. Okay, if you'll watch that video, you'll understand. I've clearly explained it though. So over here, what happens? ठीक है, these are order books considering the price has been considered like assumed. Okay, तो 99 है, 97, ये सारे प्राइस पे ये सारा है. एंड यहाँ पे ऑर्डर बुक है, मतलब कहीं पे बाइंग, किसी प्राइस पे बाई ज्यादा है, किसी प्राइस पे सेल ज्यादा है करके वैसा ऑर्डर डाला हुआ है. ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है? ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि मैच किया जाता है कौन से प्राइस पे ज्यादा ऑर्डर्स मैच हो रहे हैं. ठीक है, कौन से प्राइस पे ज्यादा बाइंग और सेलिंग हो रही है, जहां पे बेसिकली कहाँ पे ज्यादा ट्रेड हो रहा है. तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी, मतलब 25,000 जो है, इस 25,000 जो है सबसे ज्यादा है. ओके, विच प्राइस पे? 99 पे. तो यहाँ पे स्टॉक प्राइस जो होगा वो ओपन होगा 99 पे. ठीक है, बिकॉज दिस विल बी योर इक्विलिब्रियम प्राइस. देन इफ यू सी अगेन ट्रेडेड क्वांटिटी इज ओवर हियर. यहाँ पे हमारा 25,000 दोनों का सेम सिचुएशन होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन सा अनमैच्ड ऑर्डर है. ठीक है, तो यहाँ पे अगेन, तो यहाँ पे जो प्राइस जिस प्राइस पे ज्यादा ट्रेड
होता है, ट्रेडेबल क्वांटिटी होती है, उसको कंसिडर किया जाता है एक लेवल फॉर ओपनिंग. ओके, वंस यू विल वॉच दैट वीडियो व्हिच आई हैव ऑलरेडी फॉरवर्डेड यू, you won't be having doubts, or if you read this blog, it will be cleared. Then types of candlesticks done, can you please explain? भाई सपोर्ट एंड कितने टाइम पीरियड को कंसिडर करना चाहिए? जैसे कि अगर मुझे, मैं जनरली आपका एक क्वेश्चन रहता है ना कि कितने टाइम फ्रेम तक बनाना है, क्या बनाना है, तो मैं जब ड्रॉ करता हूँ एक ही बार, अगर मैंने एक स्टॉक चूज कर लिया, ठीक है, तो मैं उसका पूरा हिस्ट्री निकालता हूँ कि भाई मार्केट में कहाँ कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकते हैं, ठीक है, तो मैं सारे लेवल्स पे बनाता हूँ कि मैं बार बार ड्रॉ करना पसंद नहीं करता हूँ, मैं जिधर भी मिलता है उधर उधर मैं ड्रॉ करता, बिकॉज वंस आई हैव ड्रॉन I don't need to do it again and again. So when I'll be taking a class of how to analyze the stock from top to bottom, that point of time I'll explain you in details that how do we analyze the stock for trading. Okay. Is P1 points better than, again no need to, app का update होगा, app already है, मुझे बस onboard करने के लिए time नहीं मिल पा रहा है. We have to draw for an hour and referring that we can trade. See, we draw it minimum of 1 hour, because 1 hour will give you better view that where the price is majority of the time, like in hourly time frame, it had got stuck. Okay, it had got stuck. Okay, we trade in 5 minutes time frame. Okay, we trade in smaller time frame, but we look a broader view. What do you understand by 5 minutes? 5 minute time frame is giving you data what has happened in 5 minutes, right? 5 minutes data is just giving you what, Gaurav Dara, what has happened? Why are you raising a hand again and again, lowering your hand, raising your hands? Gaurav, what is the problem? Are you dumb or what? Or you are acting dumb? I'm explaining over here, right? You're distracting me. I have already replied you. Gaurav Soni, what's your name? What's the last number? Is it 2772? Is it 2772? Also introduce possibly only doubts should I repeat something else because I've been scheduled according to I'm sorry, Gaurav. Okay, first of all, you can exit the class. Good to know that you're asking my permission. I'm really sorry for shorting on it because I thought when I replied someone, you're asking me to check the answers when I'm in between the class. Okay, so that was my thought. I'm really sorry for that. Okay, please take care and you can leave the class. I'll talk to you later. Okay, take care, man. I'm sorry for shorting. See, do you want me to end this class? Can you do anything if I'll not take even one class? No, right? So let me complete whatever the question I have. Okay. If you have sent me the text, when I had asked you to send me the support resistance last night itself, right? Those who had sent me last night, their support and resistance, didn't I reply you? Even by 12 o'clock, I had replied everyone, those who have sent me. If you have sent after 12 o'clock, I'll reply you. Do not worry. I'm not dying over here, right? You need to understand that I'm having classes in between. I need a break. Okay, the team would have replied. I guess they have not replied. Okay, so that is the reason.
Okay, so just have some patience, man. Okay, you're lacking patience, a lot of patience. Either leave the market or get the patience. मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे समझाऊं. समझ जाओ, जितना जल्दी समझ सकते हो उतना बेहतर है. Just to reconfirm, we'll draw the support and resistance, then add Fibonacci points, the standard, and we'll set long and short position based on it. Will you be teaching more? This is just a few parts of what I'm going to teach you. As I told you that there are two bridge. What I have taught you is here, here. You do not know this level, and this is the most important thing. So you will be learning this after some days. Okay. So बिगनर्स के लिए कौन सा स्टॉक करें सीखने के लिए? आप कोई भी स्टॉक अनिरुद्ध उठा लो निफ्टी 50 से, ठीक है? धनंजय जी, जो आपका क्वेश्चन है वो आप टाइप करो, जो भी आपका है, ठीक है? मैं हिंदी में उसका रिप्लाई करूंगा. सर, ट्रेडिंग टिप्स सिर्फ सेलेक्टिव डेज पे की जा सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है कि सेलेक्टिव डेज पे डिपेंड करता है कि जिस स्टॉक को हमने एनालाइज किया है उसमें हमें एंट्री मिल रही है या नहीं मिल रही है. ठीक है, अगर मिलेगी तो ट्रेड कर लेंगे, साइडवेज रहेगा तो हम लोग अवॉइड कर देंगे. राकेश तिलरा मनी, ठीक है? मैंने 1000 बार तो नहीं, मतलब बहुत बार बोला है कि 5 मिनट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं ड्रॉ करना है. What is means by FUT? FUT means future, which I'll be teaching you in coming classes. Gap up and gap down is defined by pre-market opening. Is it possible to trade in the pre-market? If not, then why? We can only place order during pre-market. We cannot buy and then sell. You can cancel your orders, but only you can place it. After placing, you can cancel it also. Okay, but you cannot trade. Placing of order and trading is a two different things. You cannot trade because the fixed timing for trading is from 9:15. And why? Please call the exchange for that. Why they have fixed the timing for 9:15, not for 9 o'clock. Okay. Or in simpler way, if I have to tell you, when you used to go to school, at what time your college like class used to start? Before that, prayer used to happen, right? So if we don't have that much knowledge about candlesticks, another strategy to understand the market, so there is any simpler way to gain the profit? No. If you want to do self trading, then there is no other way. If you do not have knowledge, how to say identify, observe if candles is opening or closing, little bit. How to say or identify if the candle is opening or closing? Opening or closing? What do you mean? What is the confusion in this? Observe the market. How many times you have observed the market that you are having this confusion? Nobody will be having this confusion if you would have observed it. ठीक है, अगर आपने ये चीज ऑब्जर्व किया हुआ है कि मार्केट का कैंडल कब ओपन होता है, कब क्लोज होता है, you will not be having the confusion. See, I don't really think so anyone will be having any doubts if you have practiced enough from your end in the live market. Okay, अगर आपने लाइव मार्केट में काफी प्रैक्टिस किया है ना, तो आपको ये डाउट आएगा ही नहीं. लिख के ले लो मेरे से, ठीक है? सिंपल सी बात है. ये कैंडल को क्लोज होने में कितना टाइम है? यहाँ पे मैंने बताया था, टोल्ड यू दैट कि हाउ मच टाइम विल बी लेफ्ट विल बी शोन ओवर हियर. ओके, सो इफ इट इज 1 minute, the candle has just started. It will take 38 seconds around to close this candle. अभी डिलीवरी के लिए कौन सा स्टॉक में करना चाहिए? अरे यार, तुम लोगों का हद होता है. मतलब मैंने बोला है कि जो पढ़ाया हूँ वो, यहाँ पे मैं आपको पोर्टफोलियो बनाने का सजेशंस नहीं दे रहा हूँ ना. I want you to ask you something about short selling. If you're done doing short sell on share and if it's stop loss hit, then just after hitting the stop loss, can we do bid? Yeah, you can do that, Samir. Under pivot setting, what inputs to be taken? Please take a screenshot of the same. I'm showing. This is the pivots settings. Okay. Show prices, you don't need to do it. So you can just disable it, remain it, the remaining thing will remain the same. Okay. Please continue doubt sessions later on. When should I take doubt sessions? And I know when do I have to take it, right? Deepak, बिगिनर कौन से स्टॉक से करे? अरे यार, एक ही क्वेश्चंस अगर किसी ने भी रिपीट किया ना, आई विल डायरेक्टली रिमूव यू फ्रॉम द स्मैट.
Doubt sessions. What does the doubt session means? That if you have texted once, I'll check your doubts. Okay, I'll check your definitely. जितने लोगों ने अभी तक पूछा है मैं धीरे धीरे आंसर कर रहा हूँ ना, तो अगर एक भी क्वेश्चन किसी का भी रिपीट हुआ मैं आपको स्मैट से निकाल दूंगा। बहुत सिंपल सी बात है। गैप अप और गैप डाउन पे मैंने वीडियो भेजा है, और एल्स इफ यू हैव नॉट फाउंड इट, गो टू रिसर्च इन नॉट यूट्यूब चैनल। ठीक है, मैं यहाँ पे ही भेजने की कोशिश करता हूँ। Gap up and gap down predefined. I'm not creating an issue. अरे इंग्लिश में समझ नहीं आया। इक्विटी एंड फ्यूचर का ऑप्शंस, जब इक्विटी एंड फ्यूचर्स का जब मैं क्लास लूंगा तब मैं बता दूंगा आपको। अगर हम इंट्राडे में शेयर प्राइस का 20% इन्वेस्ट करते हैं तो 1000 का स्टॉक 200 में बाई होगा, और 1020 हो गया तो हमारा रिटर्न 220, 1000 का स्टॉक 200 में बाई होगा और 1020 हो गया स्टॉक प्राइस, हमें रिटर्न 220 मिलेगा क्या, या 4 रुपीज 220 मिलेगा। एक क्वांटिटी जितना आप खरीद 200 का खरीदे हो, ठीक है, 20 रुपए आपका प्रॉफिट होगा। सर, व्हेन यू से अबाउट प्राइस रिवर्सल फॉर ड्राइंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन लाइन, कैन वी कंसीडर फॉर्मेशन ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पिन बार्स? यस यू कैन। सर, इंट्राडे के लिए 1 आवर में सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आउट करना है तो कितने मिनट का कैंडल तो को शो करके ट्रेड लेना है? 5 मिनट का कैंडल। ओके, एंड इसके अलावा आपका कब अपडेट, हाउ मच कैपिटल वी नीड फॉर लाइव ट्रेड? First live trade you can observe, maximum capital you should be using is 3000. You will be added to the Telegram group once the course gets over. Are those YouTube videos posted are recordings? Yes. Code will be given in today's class. Yes. All candlesticks एक बार repeat कर दो, already done. Which candlesticks pattern is important for intraday? The 4 which I have taught you are important. Advanced course कब से start होगा और कितना pay करना पड़ेगा? Advanced course mostly it will be starting last week of October. The total fees will be around 18,000 inclusive of GST. Here you have get 2 EMI, 11K or maybe 11K plus 7K to be paid within 2 months. Contain it on, you'll learn later on. How to trade profitability daily in intraday stocks with your strategy. When I'll teach you, you'll understand that. Sir, can we use support and resistance in chart for more than 1 week? Like, can we use it for swing trade? Yes, definitely we can use it for swing. I'll be teaching you when I'm going to teach you for short-term trading. I didn't understand short selling. See, short selling, you will have to watch the video. You will have to watch the video first thing, and you will have to practice it in the live market through your Demat account. Why trading market is under timing like 9:30? Basically, market will be running the whole time, right? Market trading time is 9:15 till 3:30. College student who intraday or other you opt. If you do not have time, then intraday cannot be done, right? IPO का minimum second day पे 3 times subscription होना चाहिए. Okay, I guess I have answered all the questions which has come up. Please let me know the more doubts and do not repeat the same doubts which you have already asked me. अगर आपने एक ही डाउट पूछ लिया है तो वो डाउट आप वापस मत पूछना. Be attentive. Let me know if you have more doubts. If we sell first and then buy back, do we need to have money? No. When we see, simple thing is that when you are entering into a museum or any kind of zoo, then only you pay for the ticket. You don't pay for exit, right? आप pay नहीं करते हो exit का. Same thing यहाँ पे है. When we enter into a trade, then only we have to pay. Otherwise, we don't need to pay while exiting. Will you please clarify the steps and manners to proceed as step 1, draw and then figure out candlesticks, or it doesn't matter? First is that draw support resistance first and then figure out candlesticks, or it doesn't matter. Figure out candlesticks as in, what do you mean by that? Reality of market. If you run behind profit, if you run behind money, your money will run behind from you. Please explain, Vic. Vic tells us where the prices had gone, first thing. Okay,
where the prices had gone, but it did not close. Apart from that, it tells us about the rejections. Means here there are buyers like at this price, whenever it is coming, there is a rejections. So if the wick is towards downside, it will be showing you rejections towards downside. What is a span and exposure margin block for NSE and CDS? That is for the intraday. The term we use basically to get the leverage, it is completely based on an expand and exposure. Okay, so you don't need to get into these technical terms. Option chain भी cover होगा. Gap up and gap down पर वीडियो कब भेजा सर, प्लीज भेज दो, लिंक मुझे नहीं मिला था. I've shared it. Is it necessary to trade throughout from 9:15 to 3 p.m. or there are specific times when we have trade? Where is it better? For example, I realized when paper trading, no clear patterns found in first dealer. See, there is nothing like perfect timing. People have their own strategy and they make it up. So from 9:15 till 9:30, the movement will be very fast. Either you will make money in this, you can lose. Last week when I was trading with PTMS friends, we had traded just for 10 minutes and we had made around 2 or 3% return on our investment. It was very quick and we had captured the target within 5 minutes. Generally between 9:15 to 9:30, beginners should avoid because you will panic a lot. आप बहुत panic करोगे 9:15 से लेके 9:30 तक, क्योंकि मूवमेंट इतनी फास्ट होती है कि आप कैप्चर नहीं कर पाओगे उस चीज को. ठीक है, तो उस टाइम अवॉइड करना है. बेस्ट जो एक ट्रेडिंग सेशन होता है, आप कोशिश कर सकते हैं 11 और 12 बजे के बाद अच्छी ट्रेड्स भी मिलते हैं. 9:30 से लेके 10 से 11 बजे तक भी मिलते हैं. ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आप कब ट्रेडिंग कर रहे हो, बट जनरली आपको 10 बजे के बाद अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे. किसी स्टॉक, वो डिपेंड करता है अगेन स्टॉक टू स्टॉक. You might be thinking कि after 10 o'clock or after 11 o'clock you are getting good stocks, but some stocks will give the movement by 10 itself and later on it can go in the range. ठीक है, generally after 10 o'clock you can understand that the market is having a stable movement. Before 10 the movement will be very fast. So even to stabilize your trading career, you can go after 10 or 11 o'clock. ठीक है, Sahin. Sir, if we do not have that much knowledge about candlesticks and other strategy to understand, so we are today only tomorrow we will be launching our short-term trading plan, basically for those people who do not have time to trade in the market. Let it be if it is Indian market or forex market. Okay, you do not have knowledge also. Okay, and you are unnecessarily investing. So we will be having a short-term plan like 6 months and 1 year, where we'll try to generate for 6 months 20% return or 30, no risk involved. Even if the losses are going to come, it is like that, it will be recovered. Okay, it won't be like Paytm stocks and all. Okay, so that we are going to come up. So that is that you can take it up. Can we trade with 100 rupees or 200 rupees in Nifty Bank? Depends on the option price. If the option price is like on the day of expiry, the option price will go to 1 rupee also. So you can just trade 25 rupees, but there is no point of trading with 100 rupees or 200 rupees in bank. It's basically you are donating that money. So I can give you my Google Pay or any number if you want. You can donate that 100 or 200 rupees to me. Anyway, you will be losing. You're not learning anything. Okay. Even to understand trading, you should start with 1,000 or 500 rupees at least. Okay, even 100 rupees also fine, but 500 I'll suggest. Trading view पे Google पे scroll करने से सही है कि ऐप यूज किया जाए. मैं अगर आप ट्रेडिंग व्यू ऐप के बारे में बोल रहे हैं तो कुछ दोनों में से कुछ भी चलेगा. Will you give calls? Okay, just let me tell you, I do not give intraday calls at all. ठीक है? If anyone in the group or in the Telegram group also, if it is giving you, they will be removed. The reason why do not I give Telegram groups, because Telegram is intraday is something which should be done by yourself. Okay, nobody will be there to help you out. I'm giving the analysis basically. It's with a reason that why I'm like for short term when we are starting, I thought a lot
कि should I go for this or not, because many people have been asking me for portfolio management. Okay, portfolio management where basically they want me to handle their account. That is not possible from my end to do it. So it's better, I thought, because even I had taken only once a portfolio management and minimum capital requirement, it was 10 lakh rupees. So it is not possible for everyone to get the 10 lakh and my fees will be 10%. It's better to give the best at very affordable price. So that's the reason I thought, let's go for short term. Why? Risk free. The chances of losses are very less. Even if you're losing money, we can hold it the stocks for a while. So this is the best way to make money, profit. Like if you're not having time, and you can save your capital as well. Okay. So I do not give calls for intraday, for options, for equity. I'm only giving the reason for the trade analysis with analysis, that why I'm giving you this trade. What does it mean? The range of the body in candlesticks, the color of the body, that green and red. How much should be the difference between support? And you told that 10% from the price is that minimum. I told if the current price is 1,000 rupees and someone was asking that key till where I should draw this support and resistance, then I had told up to 10% towards upside and downside you can draw. If you'll ask between the difference between two support and resistance lines, it should be minimum of 2%. What all candlesticks needed for swing trade? The same candlesticks which I have taught you for here. So is subscription of trading even necessary? No, you don't need at all. Many of the people are not taking it, so it's completely fine. You don't need it at all. At times, candles indicate that market will go down, but because you have not yet learned everything. Okay, candlesticks, if the candlesticks were like 100%, okay, everyone would have made money, right? So there is always going to be flaws. Like 80% it will be working, 20% it may not, and still you have not learned everything, so you cannot really comment. Okay, and there will be always a reason that why market is not moving in your favor. Do we analyze on trading view and then trade on zero? Yes, or can we analyze on you can analyze on zero directly, but I have personally preferred trading view, and all of my students, those who are trading, they also prefer the same because they find trading view much more convenient. Points go up, point down. What is the meaning? Points go up, points go down. What is meaning? I don't know. What are you asking? Having doubt for intraday? I guess I already. Okay, let's say I buy at 200 share prices 1,000. Now the closing time share price is 700 loss. Then how will deduct 100 rupees from fund? Okay, basically, good question. And I guess I had not answered this question, Dhwani Modi. Okay, really appreciate it. I had not thought about this. So if you remember, I had told you maximum it can go is up to 20% is downside. So maximum it can go up to, let's say, 800. So your whole money is gone. But what happens that as soon as, because if you have just 200 rupees, you got this stock for intraday. Okay, आपके पास 200 रुपया था, आपने ये इंट्राडे 1000 रुपए का स्टॉक खरीद लिया. अब जैसे ही वो लॉस में जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, जैसे ही वो लॉस में जाएगा, आपका फंड सेक्शन जो है वो निगेटिव में जाना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, आपका फंड सेक्शन निगेटिव में जाना स्टार्ट हो जाए. योर फंड विल स्टार्ट गोइंग इन नेगेटिव. And if the fund goes in negative, it means that you have utilized all the money and you are completely going above that level. Okay, you will start getting text from your broker that you have utilized more than 100% of the margin. So better keep your fund, like it should be minimum, it can go to zero. If it is in negative, try to add funds. If it goes in negative, let's say a situation where the prices are falling continuously, okay, the broker will automatically exit. If you are losing in equity market, let's say you are losing around 50% of your capital, and if you're still holding it, they will reduce your quantity size. वो लोग अपना quantity size reduce कर देंगे, वो लोग exit कर देंगे. Broker अपने end से कभी pay नहीं करने वाला. What we consider both pin bar are, what we consider when both pin bar, the next candle closing, basically वो range जब break होगा तब. When, sir, can we use support resistance chart for more than 1 week like we can use it for swing? Yes. What is swing trade? Swing is nothing but short term. आपने एक बार प्री मार्केट का बताया था कि अपन प्री मार्केट में इंट्राडे की बाय सेल ऑर्डर लगा सकते हैं. हाँ, नॉर्मली आप जो रेगुलर ऑर्डर में जाकर इंट्राडे करते हो वैसे ही कर सकते हो. स्वरूप, दिस इज द सेकंड टाइम यू आर आस्किंग मी.
Will there be a class of F&O? Yes, Bobby. Wick size matter करता है? Yes, it does matter. It should be at least 3 times of the 2 to 3 times of the body. ठीक है, तो generally once you start observing the market, then you will understand. Does number of candlesticks also vary in different time frame? Yes. Number of candlesticks also vary in different time frames. Please elaborate this question. एक बार pivots की setting बता दो. Already बता दिया मैंने, ठीक है? तो एक बार आप recording देखना. When we are to take first trade, I'll update on that. In the uptrend market, many times we see bullish pin bar, so it means market go up or down. It depends where you are seeing. If it is at support level, then it is going to go up. Telegram पे कब ऐड करोगे? Telegram पे जब कोर्स खत्म हो जाएगा. What is settled amount and unsettled? Settled amount is basically the amount which has been credited to your Demat account, and unsettled which has not been added to your funds. ठीक है? The settled basically it can be a profit which has been added already to the funds. Unsettled amount basically means the amount of money which you have made it, but it has not been added to the fund section. If you're trading in a specific market and news arrive, how will it affect? If it is a negative news, market will go down. If it is a positive, it will go up. How to analyze option chain data? Once I'll teach you that, then you can ask me this question. Sir, equity also we can sell then buy. Yes. Sir, गुस्सा मत, but एक बार gap up and Gordon क्या होता है बता दो. कल मार्केट 1000 पे क्लोज किया. अगर आज मतलब फ्राइडे को 1000 पे क्लोज किया, अगर 1000 से नीचे मंडे को ओपन होता है 915 पे, ठीक है, तो उसको गैप डाउन बोलते हैं. और 1000 के ऊपर होता है तो गैप अप बोलते हैं. ठीक है, अब गैप अप और गैप डाउन होता क्यों? वो 9 o'clock से 9:06 तक, ठीक है, 9:06 और 9:07 तक जो भी ऑर्डर प्लेस होते हैं ना, तो जिस भी प्राइस पे सबसे ज्यादा क्वांटिटी जो है वो ट्रेड की जा सकती है, जो मैंने भेजा ना, वो आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा. Update on Telegram group, no reply. I had already told that I'll be adding you in the Telegram once the course will get over. After completing this course, can we trade profit minimum amount? See, whether you will become a profitable trader or not, it completely depends on you. Why? Because you are wondering about the strategy, right? So strategy you will be learning, but how do you control your emotions? That matters the most. Meaning of swing, short-term trading. What new things you will learn in advance course, that can you tell? Once I'll launch it, I'll talk about it. As of now, let's leave that. Sir, is hedge trading available in share market too? Yes. How census works? That's just an index. We cannot trade in that. Please tell about advanced course, what it include, and all short note. I'll tell. Let me complete the doubt sessions and then I'll talk about it. Okay. In F&O, which time we need to, the same time which I'll be teaching you the strategy, I'll tell you, do not worry. Rupees से related होता है क्या? Points, pips होते हैं, points in percentage. Trading view is a free and paid. इस सर चार्ट देखने के लिए लैपटॉप है तो कन्वीनियंट होता है. सर जोन ड्राइंग भी सेम ही होता है क्या लाइन जैसे? यस, थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी होता है. कभी कभी रीटेस्ट के चक्कर में एंट्री मिस हो जाती है, क्या करेंगे? छोड़ दो. What is means by future? Already answered that FUT means future. I'll be explaining this thing once I'll teach you futures and options. Can we use 15 minutes candle for chart in intraday? I do not have a strategy for 15 minutes, but if you have one, you can use it. जो आप WhatsApp पे भेजते हो, वो WhatsApp पे सर जो आपने लिंक भेजा था वो WhatsApp पे भेज दीजिएगा. यार कॉपी कर लो ना. सर स्टॉक में पॉइंट्स क्या होता है? I guess already you got the answer, हिमांशी. आज क्लास होने वाला है, क्लास चल ही रहा है, डाउट सेशन चल रहा है. Okay, I have already answered all the questions. Let me know if you have more questions. If you do not have, then you can type. You don't need to type anything. जिनके भी और questions हैं मैं answer कर देता हूँ. I need a suggestion, not a doubt. I've started reading trading in the zone. Should I continue it or should I read? No, you have to continue it. अगर 10K है तो रिस्क को मैनेज करके कितना ट्रेड लेना चाहिए? 2 ट्रेड, 300 से 500 के बीच का प्रॉफिट. Ansh Chopra, if you'll ask about code, please leave the class. When people buy same company shares from different brokers, like after buy, where will the amount go from them, to SEBI or to the company? Exchange. Basically, whenever we buy, it goes to the exchange. Okay. So we try to understand. There is a let's say there is a let me explain with the help of whiteboard.
this is a body where trading happens. Now, this body cannot control all the things. So they have divided into sub parts. Okay. Now, all these sub parts, basically, these are brokers. Okay. And these are CDSL, basically exchange, you can consider as of now in a simpler way to understand. Now, whenever anyone is placing orders, okay, whenever anyone is placing orders, it is directly sending it to the exchange, and all the companies, all the brokers, everything will go directly over here. So the buying and selling is directly happening at this point of time. Okay. The money, if I am buying it, okay, if I am buying it, so my money will go to that person who is selling it. Okay, who is selling that. Simple business. Sir, when we are going to going for intraday, suppose we pay 500 for buying the stock, this price will include brokerage. No, it will not include brokerage cost. Brokerage are deducted after the market. Basically, next day you will see that how much brokerage they have deducted. Delivery means buying the stocks by paying full amount of money. Why short sell has to have more capital or margin? In equity, it is same as buying. For options, it is more. Why? Wait for the option classes. Upcoming classes में सिखाना 9:15 to 9:30 टाइम में प्रिडिक्शन लगाना. आदर्श 9 प्रिडिक्शंस हम लोग नहीं लगाते हैं. प्रिडिक्शंस मतलब आप बस अनुमान लगा रहे हो, ठीक है, कि ये यहाँ जाएगा. तो वी ट्रेड बेस्ड ऑन स्ट्रैटेजी. ओके. सो नोट्स कैसे बनाए क्लासेस के, जिससे बनाने चाहिए भाई, इसका क्या आंसर दूं? Why did you tell about that Zomato extension? There was no reason. I do not worry. It's not any kind of web series or anything that if I'm showing you anything, there'll be a reason behind that or anything. No, do not worry. I was just watching a video, then I was checking it out. That was how much I would spend, nothing else. Trading or investment difference बता दीजिए. Trading is for a day. Investment is for the future, basically the future investment which we do. So investment where you pay the full amount of money that like you invest money your parents would have invested in post office, jewelry, lands, वो वैसा. आपका नंबर वो डाउट वाला 63633 से जिस नंबर से आपको जूम लिंक मिलता है. We can place order from 9:30, but who can place order till 9:06? Anyone can place order till 9:06. Okay, you can place also. You can just try it. How many trades at a time? 2 trades maximum. Joydeep. Joydeep Basu. If I'm not wrong, you are in PTM, right? I guess just raise me hand क्योंकि मुझे मालूम है इस नाम से है, but इस नाम से और okay. भाई ये क्वेश्चन कैसे आप पूछ रहे हो आप? You already have learned this ना. 2% मतलब कि ऐसा है कि अगर 1,000 रुपए पे मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया है, तो 1,020 पे हमारा दूसरा रेजिस्टेंस रहना चाहिए, तो थोड़ा गैप होना चाहिए. What are types of investment we will cover in this course? What all we are going to cover intraday and short term. So trade लेने टाइम SL कैसे फाइंड करें, धीरे धीरे समझ जाओगे जब मैं क्लास लूंगा उसका. आपको व्हाट्सएप पे भेजा था होमवर्क, आप प्लीज देख लेना, मैं देख लूंगा. If we trade in any stock, in how much time we have to wait for profit and loss? Till the time you're not getting the profit or loss, you cannot. There is nothing like. Sometimes you'll get immediately. Sometimes you'll have to hold for 1 hour or 4 hours also. Can you give call to advance course and entry and exit twice calls, or you give your opinions? I do not give any kind of calls either in advance course or anything. I'm not in favor of giving calls and all. I seriously hate this thing. And I will be taking analysis basically before, let's say for Monday, we will be having analysis class on Sunday, that key how can we trade in that stock, okay, like where we should buy and what should be the reason behind that. Okay, and I trade once a week along with them. When we are ready to trade after how much classes, I'll update you, Anand. This is the second time you're asking me the same question. So short summary on fake out, how we know about it. Simply, this was a resistance level. The candle closed up. It was supposed to, let's say, it go up, but it did not go. It came downside. So this is a fake out.
फिबोनाची की सेटिंग्स बता दो सर। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए कितना लगेगा मिनिमम ट्रेड करने? एक जो अच्छा कैपिटल रिस्क पे अकॉर्डिंग 30 to 50,000। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। यस। कैन यू guide how to pick stocks for intraday and short term? I have not yet covered these topics yet. Sir, minimum how much capital we need if we join? Minimum capital you need starting capital will be around 3,000 rupees. That's it. When I'll tell you when do you have to increase, but for first month you should have just 3 months. After 6 months, arrange a capital of around 30,000 rupees so that you can make good profit. Is binomo trading good? No. Trading on investment, अनिरुद्ध कुशवाहा, आई गेस इसका तीसरी बार मैं देख रहा हूँ। ठीक है अनिरुद्ध, तो क्या आप चाहते हो कि मैं आपको स्मैट से निकाल दूं? हाँ बताओ। मैं निकाल दूंगा, अभी के अभी आपको निकाल दूंगा। मैंने बोला कि मैं किसी का यहाँ पे मैंने कोई भी डाउट मिस आउट नहीं किया। ठीक है, हर एक एक डाउट मैं आंसर कर रहा हूँ। डाउट सेशंस का मतलब ही वही होता है कि मैं आपके जो भी ये 10 मिनट का डाउट सेशंस नहीं, पूरा क्लास ही डाउट सेशंस का है। तो मैं सारे डाउट्स में क्लियर कर रहा हूँ। तो एक ही डाउट्स 10 बार भेजने का मतलब नहीं होता है ना मेरे भाई। What does it indicate if closing day at support level, or for example, I draw Tata Motors resistance and support line and market closed near support? That means market is not able to go downside. Can we start intraday by taking capital of 3,000? So how much trade we should take in a day? Maximum 2. I'll teach you about how risk management. Do not worry. So थोड़ा हिंदी में भी बोल दो प्लीज। अंश, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तभी तो मैं हिंदी में बोलूंगा। सर गोकुल रिफर्स का चार्ट ओपन करके कुछ गाइड करिए ना प्लीज। आई नो इट्स आउट ऑफ डाउट, बट कैन यू प्लीज गाइड रिगार्डिंग दैट इट इज गुड और बैड? फर्स्ट ऑफ ऑल आई डू नॉट नो अबाउट विच काइंड ऑफ अ स्टॉक इज दिस। ठीक है, कोई पेनी स्टॉक्स होगा, बट अगर मैं मूवमेंट देखूं तो मूवमेंट भी मुझे कुछ खास वैसा दिखा नहीं है। काफी टाइम से इसी रेंज में घूम रहा है, तो नो ट्रेड इन दिस। हाउ टू एनालाइज ऑप्शन चेन डेटा देन एग्जीक्यूट ट्रेड अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स? शुभम वार्थी, क्या मैंने have I taught you this option chain till now in last 7 days? No, right? So how can I answer this question? For intraday, are Nifty 50 good for short term or any other suggestions? Nifty 50 good for short term as in? Sir, हम live trend करेंगे ना आपके साथ। Yes. What is FI and DI? FI means financial institutional investor. Basically, these are foreign investors and foreign institutional investors, and DI is domestic. Basically, these are those people, big money. They are having a lot of money. Okay. So FIs are foreign people, DI are like Indian people. Okay. Sir, in uptrend market, if there is a bearish pin bar form, but that price are in the support, then what should we do? Bearish pin bar is formed, then wait for the next candle closing. Bro, do you have any spot for an intern for your website and Android app? I know React, JS, JavaScript, Kotlin, and Flutter. See, I'm not looking at any things as of now, like what is the requirement in the team and all. The management decides which they have to go. If I need something, I'll definitely update in the stories. Okay. When you get angry, I kind of scared. You have not seen the, like, I'll be getting angry only when you'll irritate me. Otherwise, I don't have a reason to get angry, right? Why will I get angry unnecessarily? So for an example, let's say if you're walking, if you're not disturbing, let's say animals, if you do not disturb them, they won't really hurt you, right? So it's the same thing. I'm not an animal though. So if you'll not really disturb me or irritate me by asking something which I've told you not to do it, by saying again and again, repeating the question. So yeah. सेम थिंग्स क्रिप्टो में होता है। मीन्स हम इसी बेसिस पे क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं। क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं, डिपेंड करता है, थोड़ी सी चीजें अलग होती हैं। आप एक बार वीडियो देख लीजिए आकाश, मैंने बहुत बार बता दिया है। तो वो वही होता है ना कि कल से जिम जाएंगे, कल से जिम जाएंगे, कल कभी नहीं आता। तो आप एक बार वीडियो देख लीजिए। पॉइंट्स क्या होता है, जैसे कि निफ्टी 50 फेल बाय 50 पॉइंट्स डाउन,
इसका मतलब ये होता है कि निफ्टी 50 17,100 से 17,050 पे आ गया, मतलब 50 पॉइंट से नीचे गिर गया। कैन यू टेल अबाउट सम स्टॉक्स फॉर शॉर्ट टर्म? नो सर, गैप अप एंड गैप डाउन के लिए जो ऑर्डर्स 9 से प्लेस होते हैं, किस टाइप के ऑर्डर्स होते हैं? रेगुलर ऑर्डर होते हैं, रेगुलर ऑर्डर प्लेस हो जाते हैं 9 o'clock से। कलर मैटर करता है कैंडलस्टिक्स पैटर्न में, बुलिश एंड बेरिश पिन बार में नहीं मैटर करता है। ठीक है, आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस which had come. Let me know if you have more questions to be answered. सपोज आज टाटा शेयर 100 पे क्लोज हुआ, नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन होने वाला, अगर मैं 9-9-6 के बीच में 1000 का बाइंग लगाता हूँ तो मुझे शेयर कौन से प्राइस में मिलेगा? डिपेंड करता है कि अगर आप 100 पे लगाते हो, अगर कल मार्केट, ठीक है, 101 पे ओपन होता है तो आपको नहीं मिलेगा। सर प्लीज एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन कैसे ड्रॉ करें? नहीं बताऊंगा मैं। आप, मैंने कितनी बार बताया सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करने के लिए, बताइए। क्लासेस के अलावा मैंने आज एक बार बता दिया, बट क्लास में मैंने कितनी बार रिपीट किया था मालूम है? मैं सिर्फ 10 मिनट में बताता था पहले के क्लासेस। अगर आप किसी कोई अटेंड किया होगा ना सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो उनको मालूम है कि मैं सिर्फ 10 मिनट में ही कंप्लीट करता था सपोर्ट रेजिस्टेंस, बट मैंने इस बार पूरा क्लास लेके एक्सप्लेन किया आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना। हाँ, आप लीव कर सकते हो अगर ठीक है। आई गेस और कुछ तो डाउट्स होना नहीं चाहिए, बाकी देखते हैं। टाटा टेली सर्विस पार्टनर विद गूगल कुड, सो प्राइस विल राइज और नॉट? आई डोंट नो, मैं इसका क्या आंसर दूं? मेरे बोलने से थोड़ी होगा, डिपेंड करता है क्या ये पॉजिटिव न्यूज है, नेगेटिव है, या कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाट आर द बेसिक्स टू क्रिएट द स्ट्रैटेजी? फर्स्ट लर्न अबाउट द मार्केट। मंडे को फर्स्ट टाइम ट्रेड करने वाला हूँ, कितना अमाउंट से स्टार्ट करो? 500। आप खुद देख के डिसाइड कर लो, मैंने बोल दिया निफ्टी 50 में करने के लिए, तो समझ जाओ ना यार। फॉरेक्स इज बैन इन इंडिया, कैन वी स्टिल ट्रेड इन फॉरेक्स? इज नॉट बैन इन इंडिया। आज की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। पी एन सी मैंने पढ़ाया नहीं है अभी तक। इन माई डीमैट अकाउंट कैश मार्जिन इज नेगेटिव। अगर आपका कैश मार्जिन, बेसिकली आपका फंड सेक्शन नेगेटिव होना चाहिए। वाई शॉर्ट सेल्स should have more margin? That is only in the options. When I'll teach you options, I'll tell you. औरंगाबाद कब आएंगे? वही है सर। टिल व्हाट टाइम क्लास इज गोइंग टू रन? बस अभी खत्म ही हो गया, बाकी अब बस आप लोगों को यही बस टाइम पास चल रहा है। एफआई बाइंग ज्यादा है तो मार्केट कौन से साइड जाएगा? ज्यादा है तो ऊपर जाएगा। इंडिकेटर्स जब बताना होगा बता दूंगा। 3K से कितना बना, 3K से आप बनाओगे क्या नहीं बनाओगे वो तो नहीं मालूम, लेकिन मार्केट के बारे में जनरली बहुत चीज सीख जाओगे। शॉर्ट टर्म से स्टॉक्स, मनी कंट्रोल गौतम, on your Instagram page your share market movements, what you are trying to show over here. Wait for that part, okay? When I'll teach you that how to analyze the market, then you'll understand that. I'll ask you that point of time. सर पॉइंट्स और रुपीज सेम होता है? हाँ, हम लोग उसी तरीके से बोलते हैं। ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट, ये दोनों सेम ही है यार। बात 9:15 के स्टॉक में सही ट्रेड लेना सिखाना बोल रहा हूँ। 9:15 में करना ही नहीं है, 9:30 के बाद करो ना सर। आप फ्रेशर के लिए जॉब्स का कुछ बोले थे, फ्रेशर्स के लिए जॉब का नहीं बोला हूँ मैं कभी कुछ। You have answered my question, but I did not understand. What was your question? Kotak also charges. Yeah, they do not charge brokerage. Swing trading stock. When I'll take the class of short term trading, then you'll understand. Circular class, yes. No, we do not have class. They are depositories. Okay, Yasha. I guess already अब सारे आंसर हो चुके हैं, अब कुछ बचा हुआ है नहीं। See, there will be no room for any kind of doubts, whatever I have taught you. What I have seen, the doubt is majority of the doubts are out, like ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, which is not even required. These are basically your excitement or curiosity, and that's fine. I have already answered. Short sale has to have more capital. So I was telling you, Shiv Prakash, that it is not for equity market, it is not for stocks. When we are short selling, it is for options. Okay. So when I'll teach you futures and options, that point of time you will understand. That's what I told. Okay. So do you want me to tell you about the advanced course or just end the meeting?
ट्रेडिंग व्यू का असर होता है या सर टेक्निकल को देखकर ट्रेड करना पड़ता है? टेक्निकल्स को देख के ट्रेड करता है सर। 500 निफ्टी में ट्रेड नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें लॉस के चांसेस प्रीमियम दिखे। भाई मैं इक्विटी मार्केट की बात कर रहा हूँ, अजीब हो यार। मैं यहाँ इक्विटी मार्केट में बोल रहा हूँ, बिगनर थक तक भाई इक्विटी मार्केट से सारे चीजें करना है। एंड आप लोग मरे जा रहे हो ऑप्शंस में। जितने लोग यहाँ पे ऑप्शंस में मर रहे हैं ना, जिस दिन लॉस होगा ना, चिथड़े फटके हो जाएंगे हाथ में, ठीक है? समझ में आता है तो समझ जाओ, नहीं समझ में आता है मत समझो। जरा बताना जो कितने लोग यहाँ पे ऑप्शंस में ट्रेडिंग किया ना, एक दिन का मैक्सिमम कैपिटल ड्रॉडाउन क्या रहा है आपका? जितने लोगों ने ऑप्शन में ट्रेड किया एक दिन का मैक्सिमम कैपिटल ड्रॉडाउन क्या रहा है? मतलब कि 10,000 का कैपिटल था, 10,000 पूरा गवा दिया, 70% लॉस, 50% लॉस, ठीक है? तो जिस दिन होगा ना, उस दिन फटके हाथ में ऐसी आएगी ना, रोते रह जाओगे, भीख मांगोगे कि भाई पैसे दे दे, पैसे दे दे। तो आपके अच्छे इन लोगों ने जो लॉस किया है, इनको भी मैंने वही बोला था, अगर ये स्मैट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? सब ऑप्शंस के पीछे पड़े भाई, आएगा टाइम करोगे ऑप्शंस में, ऐसा नहीं है कि नहीं करोगे। यू विल डेफिनेटली डू गुड इन द ऑप्शंस, बट देयर इज ऑलवेज अ राइट टाइम फॉर एवरीथिंग, राइट? ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम। Good to have you, Sai Kiran. Where can I get all the recordings? I'm sending it in the group itself. 9 out of 10K. तो समझ जाइए, मतलब वो मार्केट खुले बराबर के ट्रेड मूवमेंट्स में मैं भाई आपको स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा ना आदर्श, उस टाइम देखना आप। प्रेशर के बारे में, जॉब्स के बारे में मैंने कुछ नहीं बोला। लास्ट वीक एफआई बाई ज्यादा था तो भी मार्केट रीजन किया। यार मैं एफआई और डीआई की बाइंग पे मैं फोकस नहीं करता हूँ सौम्या। मैं इतनी सारी चीजें मैं नहीं देखता हूँ कि एफआई क्या कर रहा है, यूएस मार्केट क्या चल रहा है, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। आई डोंट रियली केयर अबाउट व्हाट्स हैपनिंग ओवरऑल इन द वर्ल्ड। हु केयर्स अबाउट द इकोनॉमी? हु केयर्स अबाउट की व्हाट इज एफआई इज डूइंग और डीआई इज डूइंग? what is what is happening in US market if US market is going downside? Basically those who have carried their position for next day, basically they are holding some position for next day, they will be only worried if I have booked my profit or loss, I don't need to worry, ठीक है? Now even though if FIs or DIs are buying in more quantity, it does not mean that the market will be going upside, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट कल के दिन अप ही जाएगा या फिर नीचे ही आएगा। वो that is particularly for the duration time कि overall what has happened, they do not tell you कि हाँ ये मतलब कि एफआई ने बाई कर लिया है तो मार्केट पूरा दिन ऊपर ही जाएगा, nothing like that it happens। पेपर ट्रेड पॉसिबल इन ट्रेडिंग व्यूअर्स, एडवांस के बारे में बताओ। बता दो सर, पैसा जमा कर लूंगा। ओके, आई विल गिव यू द वेबसाइट नेम ओवर हियर एज वेल, ठीक है? मैं आपको वेबसाइट नेम बता देता हूँ। डिटेल्स पिछले बैच के अकॉर्डिंग डाला हुआ था। क्या था? द वेबसाइट नेम इज प्रो ट्रेडिंग मेंटरशिप, ठीक है? यहाँ पे वैसे सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। I'll tell you verbally what you will be. I know you are worried about the prices, so let me tell you the first price. I'll directly go. जब भी ये start होगा, first thing is that you will have to register yourself by paying 1,000 rupees. The link is still activated. You don't need to be using this link. Then I'll tell you. Let's say if we are starting the classes around 20th September. So people had to pay the EMI before 20th September. So let's say I'm starting this class on after 2 weeks. Let's say 2nd of November. So you'll have to pay 11,000 in total by before that, like before 2nd November, and rest amount which is going to be 6,000 can be paid after 1 month, which is going to be first week of December. Okay, this is regarding the fees. Why you should? We will be having once this is going to be for lifetime. Once you have enrolled, that means even you can come back after 4 years, 5 years, 10 years, like this. Okay, this is after the discount. Okay, so those who जो भी ये सारे discounts के बाद है, क्या discount था वो सब आपको बाद में बताऊंगा। actual fees increase तो नहीं करेंगे mostly, ठीक है? लाइव ट्रेडिंग ये सब वर्थ छोड़ो, बट व्हाट विल यू बी गेटिंग, ठीक है?
every week we will be having one live trading sessions at 4 p.m. We are having pre-market and post-market. Basically how can we take up the trade next day, we will be understanding. ठीक है, तो हम लोग कैसे सारा प्लान करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस होगा, फॉरेक्स की ट्रेडिंग होगी, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होगी, बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, एडवांस प्राइस एक्शन. लेट मी ओपन दैट पीडीएफ व्हिच आई हैव फॉर दिस. या तो आपके हर दिन, इट इज एवरी डे वी विल बी हैविंग क्लासेस 4 p.m. to 5 p.m. we'll be having equity market analysis और options के भी analysis होंगे. As of now we are having 10 p.m. को different classes चल रहे हैं. Recordings will be given for lifetime. One live trading every week plus Telegram group. There'll be 4 to 5 Telegram groups for all the kind. Like options के लिए we are having different group. For equity we are having different. For forex we are having different. For short term we are having different, like this. Advanced strategy you will be having it. Different EMA strategy, demand supply zone, like there are around 5 to 7 strategies. You will be learning more about the market. Options in depth, we will be having a lot of strategies. Okay, I'll be explaining in details. Okay, तो जो भी options का है वो completely in details होगा. ठीक है, then forex का fundamentals का भी in details होगा, जो भी हमें समझना है fundamentals के बारे में. Mutual funds के भी बारे में रहेगा. Then we will be having forex के बारे में भी रहेगा, forex introductions भी रहेंगे, सारी चीजें रहेंगी, forex के बारे में भी रहेंगी. टोटल कॉस्ट विल बी 22,000 रुपीज. जिन ये सारी चीजें रहेंगी. रिव्यूज वगैरह बाद में आपको मैं दिखा दूंगा क्या रिव्यूज है क्या नहीं है. जो ग्रुप्स आपको मिलेंगे वो बता देता हूँ. Smat में you will be getting only one group of a Smat discussion. In PTM we are having different groups for all the different kind of purpose which we are having it. So let me show it to you. एक ये मेन ग्रुप है where we discuss everything about the equity analysis. ठीक है. Then there is a chit chat group. Oh, someone purchased the car. अच्छा. So this is chit chat group basically where you can just get along with each other. ठीक है. Then this is an option groups जहाँ पे सारा options का in detail सारी बातें होती है, हम लोग करते हैं. ठीक है. Then we have PTM main group chit chat हो गया. फॉरेक्स मार्केट का है, जिधर भी एंट्रीज वगैरह मिलती है वो सारा अपडेट इधर मिलता है. देन वी हैव पिटनर, दोज हु आर बिगिनर्स, फॉर देम इट इज अ डिफरेंट सेपरेट ग्रुप फॉर अंडरस्टैंडिंग. पीटीएम शॉर्ट टर्म के लिए भी है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फॉरेक्स डिस्कशन ग्रुप वी हैव. देन वी हैड अ मीम एज वेल. वी हैव अ मीम ग्रुप. मीम तो सबके लिए ऐसे. ठीक है. तो ये सारे ग्रुप्स मिलेंगे. दिस विल बी मोर मॉडिफाइड बिकॉज वी आर मूविंग अहेड टू what do we say, Discord. Okay, so yeah, that's all from my end, guys. I guess it is more than enough. Baki in details I'll be sharing you once we are coming up. Okay, now code क्या दूं. I'll practice more in live market. That's the code for the day. That's all from my end, guys. Bye, good night, take care, and I'll see you on Monday. We do not have class on Sunday. I'll see you on Monday with a new topic, an interesting one. So see you there. Okay, happy weekend, guys. हाँ, एडवांस क्लास की रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे रहेगी. अभी कल मंडे से सारे रिकॉर्डिंग्स आपको अब ऐप पे मिलेंगी. Yes, we do have a course on fundamentals. चलो, bye. सबका हो गया भाई. जय श्री राम. बाय, गुड नाइट, टेक केयर. इतने परेशान रहते हैं सब कि बस 8:43 को ज्वाइन किया हूँ. काफी लेट हो गए.
चलो बाय।